आई 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 गर्मी है आई, साथ में अपने सुपर समर सेल है लाई। जी हाँ, अप टू 90% ऑफ और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग लाइक एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड डिफेंस। साथ ही साथ अब आप जीत सकते हैं गोवा जाने का एक मौका। तो जाइए इस 6, 7 और 8 अप्रैल नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और सुपर कोचिंग में एनरोल कीजिए अभी। Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we are going to continue our discussion on the PYQs of data structures and C programming. तो बेटा कल वाले सेशन में हम लोगों ने ईयर 2017 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. Today we'll continue with our discussion on the PYQs of 2017. All right. So as you know that for each question I'll be giving you 30 seconds to 1 minute according to the requirement of the question. So you have to attempt that question, and in case you know the answer, you can write that in the chat section, and otherwise you can post your queries if you are unable to understand any point. So without wasting our time, let's go to the first question. This question is based on the stack. So some code is given to you. Basically, you have to tell that what will be the output of the code if we are going to execute this code, then what it is going to return. Okay. So just give it a try. For this question, you have 1 minute. अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डाउट है तो आप लिख सकते हो कि अनेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन और व्हाटएवर यू फील लाइक. अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में डाउट है तो पर्टिकुलर लाइन लिखो. तो बेसिकली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द ऑप्शंस. ठीक है, तो इस साइड पे आपको देखना है. Following is a C-like pseudo code of a function that takes a number as an argument, यानी कि एक नंबर है जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, and uses a stack S to do the processing. So how it is processing the given number n, this is what we have to return. जो लोग सेशन को लाइव फॉलो कर रहे हैं बेटा एक बार कंफर्मेशन दे दो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन. ऑडियो वीडियो में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. Great, thank you. Okay, so let's start the discussion over the solution. So here we have a function fun which is taking one integer parameter. One integer number is taken as the parameter. So यहाँ पे this is the starting of the fun and end of fun, and this is the while loop, starting and ending of the while loop. Now here this is saying that stack S, say it creates the empty stack. सबसे पहली लाइन क्या है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट फंक्शन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है. तो सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टैक क्रिएट हुआ. लेट अस क्रिएट अ स्टैक हियर. लेट अस अज्यूम दिस इज S. okay, empty stack is created. as of now there is no element. now n के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है. आप यहाँ पे देख रहे हो n को मॉडिफाई कर रहे हैं. so let us consider some value of n. let us assume that, assume कुछ भी नंबर ले लो. let's assume n is equal to 11. okay, now while n is greater than 0, जब तक n की वैल्यू greater than 0 है तब तक क्या करना है, these are the two statements. पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, we have to push the value in the stack. कौन सी वैल्यू पुश करेंगे, n modulo 2. now we know that modulo function returns the remainder. अगर यहाँ पे n की वैल्यू 11 है, then obviously 11 modulo 2 comes out to be, can you remove the bar at the bottom? निकिता सॉरी ये अभी बेटा रिमूव नहीं कर सकते, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे printf के बाद सिर्फ एक printed स्टेटमेंट है. आफ्टर दिस वी जस्ट हैव, it's like pop an element from S and print it. let me write here. okay,
and this is the end of the print statement. उसके बाद कुछ नहीं है, this is the end of the function. Clear? तो बार के नीचे कुछ भी हाइड नहीं हो रहे. चलिए, नाउ 11 मॉड्यूलो 2. हमें मालूम है कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, इफ द नंबर इज इवन, तो डेफिनेटली द रिमाइंडर विल बी 0. इफ द नंबर इज ऑड, रिमाइंडर विल बी 1. सिंस हियर n is odd number, so remainder is 1. So it is going to push 1 in the stack. जो भी रिमाइंडर आया, it is going to push that in the stack. So 1 is pushed in the stack. After that, n is updated as n by 2. Initially the value of n was 11. Now 11 divided by 2 is 5.5. अब यहाँ पे हम 5.5 नहीं ले सकते बिकॉज n is of integer type. अगर 5.5 का integer type लेते हैं then it comes out to be 5 only. So n is updated to 5. Again we have to follow this process. ये कब तक follow करेंगे? जब तक n की value greater than 0 है. 5 is greater than 0. So again we'll take 5 modulo 2. This comes out to be 1. 1 is again pushed into the stack and 5 is updated to, n is updated to n by 2. 5 divided by 2 is 2.5, integer part is 2, so the value of n is 2. Again, 2 is greater than 0, so 2 modulo 2, this comes out to be 0, so 0 will be pushed and the value of n will be updated to 2 divided by 2 is 1. Next, 1 modulo 2, that comes out to be 1, 1 will be pushed in the stack, n is updated by 2. 1 divided by 2 is 0.5, तो integer part is 0. अब दोबारा चेक करेगा, n is greater than 0, 0 is greater than 0, no condition is false, so it will skip the statements of the while loop. बाहर आके क्या मिला? While is empty. जब तक हमें stack empty नहीं मिलता तब तक क्या करना है? Pop out the elements from the stack. यहाँ पे आपको comment करके भी दिया हुआ है. We have to pop out the elements from the stack until it gets empty. So pop out means जो element सबसे end पे आया था सबसे पहले वही बाहर होगा because the property of the stack is last in first out. So whatsoever element was entered in the end, that will be taken out first. So first of all we are getting 1, then we are getting 0, then we are getting 1 and again 1. Now the stack is empty. Correct? So it comes out to be 1 0 1 1. So what is this 1 0 1 1? Is it the binary representation of n in reverse order? N is 11. So binary of 11 is we know that it's 1 0 1 1. This is the binary. Is it printing the binary in the reverse order? This is the output. No, it's the actually the binary number. So option A is incorrect. Prints binary representation of n. Looks like this should be the answer. Prints the value of log n. No. Log n in reverse order? No. So undoubtedly the answer is B. Very good, Mojo and Durga Prasad. Yes, correct answer for this question is B. Yes, Shubham also got it right. Clear? Very simple. हमें कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपली हमें एक फंक्शन गिवन था और हमने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए. तो इन शॉर्ट आई कैन से कि जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और यू आर गिवन विद सम कोड स्निपेट एंड यू हैव टू रिटर्न द आउटपुट, द इजीएस्ट वे इज जो भी आपको कोड गिवन है जस्ट एग्जीक्यूट दैट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड इजीली यू विल गेट द आंसर. ठीक है? Next question. You need not to solve this question. A balance factor in AVL tree is used to check. इसका आंसर 30 सेकेंड्स भी ज्यादा है, 10 सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए. AVL ट्री में जो हम बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस फैक्टर? Anyone? Right now we are discussing the concept through the questions. For next week also we'll be following the same process and after that we'll start with the mock tests. उसमें हम लोग थोड़ा सा speed पे भी focus करेंगे. Once we are comfortable with the concepts, then we'll focus on the speed. All right? So quickly tell me that what
should be the answer for this question. What is the purpose of the balance factor? D. Very good. So AVL tree में जो हम balance factor calculate करते हैं, that is used to check whether the tree is balanced or unbalanced, right? So here three values are allowed: -1, 0 or +1. We know that balance factor is nothing but balance factor क्या होता है? That is height of left subtree minus height of right subtree. Basically, the concept of AVL tree was introduced in order to overcome the worst case complexity of the binary search tree. Because we know that in the worst case scenario, a binary search tree can be the skewed tree. That means only one side is growing. So if we have to search for some element, so worst case mein it is returning the time complexity, that is order of n, or you can say that linear time complexity. So in order to overcome that drawback, we are going for the concept of balanced binary search tree. Balanced binary search tree is nothing but that is the AVL tree. अब balanced term आई यहाँ पे, तो इसलिए हमें balancing factor check करना पड़ता है. If the balancing factor is between -1, 0 और +1, basically -1 और +1 का मतलब इतना है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट है उसमें डिफरेंस सिर्फ एक हाइट का है, ओके, एक लेवल के, not more than that. So that's why two values are allowed. One is 0 and the other one is difference can be of maximum height 1. So correct answer for this question is D. It is used to check if the tree is balanced or not. So as already informed to all of you that we have an official Telegram group, that is Shefali ma'am test book. The benefit of this group is you can get daily PDFs. कल वाले session की PDF भी मैंने इस group में post की हुई है, आप लोग check out कर सकते हो. You can discuss your queries, you can ask your doubts in this Telegram group. Apart from that, you can directly interact with me. Quizzes and polls will also be conducted. एक बार थोड़ा सा syllabus हम लोग cover कर ले, थोड़ा सा track पे आ जाए, एक level पे आ जाए, then we'll start with the quizzes and the polls. तो those who want to get all these PDFs, वैसे PYQs available है, but मैंने इनको arrange किया है like year by year and topic by topic. तो जो topic आपने prepare किया, जो subject आपने prepare किया, उसके PYQs आप solve कर सकते हो. For that, you can join this group and you can download the PDF. Link of this group is given in the description box as well. Ma'am, when you take STA PYQ class, what is this STA? Others, please try with this question. This question is based on the concept of heap tree. We had already covered this type of question in the previous session. Heap tree पे already हम लोग heap tree में element insertion के ऊपर already हम एक question कर चुके हैं. I hope concept is clear, but let's see how many of you are going to get the correct answer. Technical assistant paper. Once we are done with this scientist B papers, then we'll start with technical assistant paper. Okay, let's finish one series. एक series को finish करते हैं, then we'll start with the other one. Quickly return the answer for this question. देखते हैं कितने लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा हुआ है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए. सेम सिलेबस, टॉपिक्स इन दिस, काफी हद तक सिलेबस सेम है. Not much difference is there. In fact, अगर मैं short में आपको बताऊँ ना, if you have prepared for like few common subjects are there, be it the UGC NET, be it technical assistant paper or NILET, NIC, or you can say ISRO, DRDU, GATE. तो कुछ subjects common है और कुछ concepts बिल्कुल same है. In fact, कुछ questions same repeat हो रखे. Okay?
Okay, so Durga Prasad got it right. Answer for this question is it's option A. Let's discuss this. A priority queue is implemented as a max heap. Initially, it has 5 elements. Initially, 5 elements are there. The level order traversal of the heap is level order traversal हमें given है. So it is 10, 8, 5, 3 and 2. After that, it is saying that 2 new elements are inserted. These 2 new elements are 1 and 7. तो जब भी हम elements add करते तो first of all we have to follow the structure property, then we go for the order property. Structure property के according elements add हुए. Now we have to follow the order property. Here we have to construct a max heap. Max heap says that the parent node is maximum among its children. तो parent पे जो value होगी वो दोनों children से greater होगी. So here 5 के नीचे updation हो रही है, बाकी tree में कोई changes नहीं है. 5 is 5 greater than both of its children? 5 is greater than 1 but not greater than 7. So here the swapping will take place. 7 will be swapped with the element 5. Now 10 is greater than both of its children. 8 में left side पे कोई changes नहीं है, right side पे this is the max heap tree. The level order traversal, this is the resultant tree. अब इसका level order traversal कर लो. First level पे आपके पास सिर्फ 10 आ रहा है, then we have 8 and 7, then we have 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5 and that is nothing but it's option A. Simple. तो आपने देखा कि मैक्स हीप के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं. जस्ट यू हैव टू कंसिडर टू प्रॉपर्टीज, बी इट रिलेटेड टू इंसर्शन, चाहे हीप ट्री में इंसर्शन का कॉन्सेप्ट है या डिलीशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेज दैट द ट्री शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, दैट इज ACBT. And second one is we have to go for the order property. Order property depends whether the question is asked on the basis of the max heap or min heap. ठीक है, इंसर्शन है या डिलीशन है, यही दो रूल्स फॉलो होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. This same question was asked in GATE as well. Answer. It's related to the implementation of Q. We know that two operations can be performed, two basic operations can be performed in any data structure. One is insertion and deletion. Inserting an element in a queue is known as NQ and deletion of an element from a queue is known as DQ. So what will be the time complexity? You have 30 seconds to write your answer. Very good, Deepak. Correct answer for this question is it's option A. Both the operations can be performed in order of one time. A queue is implemented using an array such that NQ and DQ operations are performed efficiently. Which one of the following statement is correct? N refers to the number of items in the queue. We know that in order to implement a queue, here we take 2 pointers. One is the rear and other one is the front. Front indicates or front pointer points to an element which has to be deleted next, and rear represents the position where we can insert the element, right? So basically this pointer is used for insertion and this pointer is used for deletion. Standard. Ma'am, technical assistant also same type of questions we can expect? Yes. Yes. बच्चे जब एरे की बात होती है ना तो डेफिनेटली हियर वी हैव द इंडेक्स. तो जब हमें मालूम है कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है, आफ्टर दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एडजस्टिंग द पॉइंटर्स. सो दैट मीन्स इट हैज नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ द एरे. अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि n आर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू, बट n कब कंसिडर करेंगे?
if there is some scenario, कोई ऐसा scenario है जहां पे हमें सारे elements को traverse करने की जरूरत है. अब यहाँ पे सारे elements तो traverse करने नहीं है. So it is independent of the number of items present in the queue. So that's why we are saying that both the operations can be performed in the constant time. Yes, Chandu, almost similar type of questions you can expect in the technical assistant exam as well. Chale, next question pe, is there any doubt on this point? Are you all getting the concepts? Next one. This is a good question based on the concept of a tree. In a complete K-array tree, definition of complete K-array tree is given to you. And here we have to identify the number of leaf nodes in such a tree with n internal nodes. I know I always told you that कि tree के कोई भी formulas याद मत करना, आप tree बना के भी you can make a guess. Very good, Deepak. C is the right answer. अगर हमें कोई starting point नहीं मिल रहा है, just think that what are the total nodes. Here we are given with the number of, we have to find out the number of leaf nodes. We know that the total nodes, tree में कौन सी nodes होती हैं? Total nodes are equal to the internal nodes plus leaf nodes. Correct? Here we have to find out the number of leaf nodes. So we can say that the leaf nodes will be equal to total nodes minus internal nodes. Now question arises is we are given with the n internal nodes, but we do not know the value of the total number of nodes. So internal nodes to n hai minus n. Let's focus on finding the total number of nodes. Let us assume we have complete binary tree. Agar complete binary tree hai, if one internal node is there, internal node is 1, then total number of nodes are 3. If 2 internal nodes are there, then total number of nodes are 5. If 3 internal nodes are there, internal nodes are 3, total nodes are 7. Can you get here one point? यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? हर एक node, if it's a complete K-array tree, that means every internal node will be having K children, right? In a complete K-array tree, every internal node has K children. हर एक internal node के K children होंगे. So it comes out to be N K. Apart from that, we have one, जितनी internal nodes होती हैं, we know that leaf nodes are one more than that. So it comes out to be plus 1. So total comes out to be n k plus 1 minus 1. Now simplify this. It comes out to be n को common ले लेते, k minus 1 plus 1. That is nothing but it's option C. Correct? Is it clear? तो lot many ways are there to handle a tree based question. कान को सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, one and the same thing. तो ट्री बना के देख सकते हो, बेसिक एक आधा फॉर्मूला, बेसिक चीजें आपको मालूम है, then you can directly substitute the values. Is it clear? Any doubt? So answer for this question is it's option C. Next one. What are the appropriate data structures
फॉर ग्राफ ट्रेवर्सल्स, हमें मालूम है दो तरीके से हम ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं, BFS एंड DFS. नाउ इट इज आस्किंग दैट विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर BFS एंड विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर DFS. B. So Q is used for BFS and stack is used for DFS. Very good. Stack में basically DFS में क्या होता है? We have to go if this is let's assume this is some graph. This is one node. Something like this is there. Okay. So if it is DFS, तो जो भी आपने नोड को विजिट किया, यू आर डेप्थ मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग इनटू द डेप्थ, ए से बी पे गया, लेट अस अज्यूम दिस इज सी डी एंड ई. सो नेक्स्ट इज बी को एक्सप्लोर करेगा, ए के सारे चिल्ड्रन को पहले एक्सप्लोर नहीं करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट डीएफएस. सो इट इज गोइंग टू एक्सप्लोर बी नेक्स्ट, then next one, and after that when no path is there, then it is going to backtrack, right? So what is this? This is nothing but this is stack. जो element बाद में add हुए, first of all it is going to explore that. So that is a property of stack. So stack is used for DFS and Q में BFS. GATE में 1 mark में question आया था, तो it was just like which data structure is used for DFS. Stack, queue, linked list, array like this. तो बिल्कुल simple question है. If you know the implementation, then easily you could have given the correct answer for this question. Next one. This is based on C programming. What will be the output for the given C code? Here it's using the concept of post increment. It is compiler dependent. B. B. No. See, first of all, here we know that when a printf statement is going to execute, it is going to start from right to left, right? तो यहाँ पे जो values assign होती हैं printf function के अंदर, that is right to left. This is post increment. So first of all, it is printing the value of I, and after that it is going to increment the value. Initially the value of I is 5. So first of all, it is going to follow right to left. 5 value print hui. After that this value is incremented. Then this statement will be executed. Now it is getting the value 6 and then it gets incremented. Next, this value is used and the value gets updated. So ultimately this is going to print 765. So the answer for this question is it's 765. Yes, A is the right answer, Nikita. बच्चे कमेंट लिखने के बाद डिलीट क्यों कर देते हो? बाय द टाइम यू गाइज आर गोइंग टू डिलीट योर कमेंट्स, तब तक मैं रीड कर लेती हूँ. Anyways, next question is also based on C programming. Output of the following program. Here we are given with a dynamic function with variable number of arguments. This is how we can declare a variable number of arguments. आप देख रहे होगे मेन फंक्शन में देयर इज अ फंक्शन कॉल टू द डायनामिक फंक्शन. दो बार डायनामिक फंक्शन को कॉल हो रही है. In the first call 4 parameters are passed and in the second call 3 parameters are passed. So in this case what will be the correct output?
What is the correct answer? First of all, the control will go to the main function. यहाँ पे function defined है, but definition किसी भी function की कब execute करती है? When there is a function call. Why there will be a compiler error, Deepak? In this case, it won't be giving you any compiler error because this is how the variable number of arguments can be passed. Argument count is not mismatched here. आप यहाँ पे comma के बाद देख सकते हो dot dot dot. This is how we can declare a function with a variable number of arguments. These three dots are representing that variable number of arguments can occur. So definitely this is correct. इस statement में कोई problem नहीं है. Okay. Now, dynamic function. First of all, this is a function call. So it's going to the definition. So here it is taking 4 parameters. First one variable name is s. So it is printing the value of s. So first parameter is 2. So this is going to print 2 first. Definition of the dynamic function is over. Control is again going back to the main function. Main function is again making a call to the dynamic function. But this time it is passing only 3 parameters. So 3 parameters are also valid क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास definition है that is for variable number of arguments. So here 3, 6, 9 will be passed. So s is getting the value 3. So 3 will be printed in the second round. Once the definition is over, it is coming back. Since the return type of the function is integer, तो यहाँ पे हमें return 0 लिखना पड़ेगा. अगर आपके पास यहाँ पे void होता, तो return statement यहाँ पे return statement देने की जरूरत नहीं थी. So here, the output of this program will be 2 and 3. तो यहाँ पे जो concept use हुआ है, that is of passing the variable number of arguments. Clear? Shall I move to the next question? Next question. My pleasure, Deepak. Anyways, काफी concepts नए आएंगे through questions. So next one is again on the basis of C programming. What will be the output here? A. See, it is asking for C program, not for C++. There's a small difference. In C++, we get 4 as the output, as static members are not allocated with the memory. Static members don't occupy space until some object is created. Occupy space if no object is created. But यहाँ पे C program की बात हो रही है. So what should be the output? B. 8. No. A is incorrect. I have given you the reason.
4 will be the correct output. 8 तो किसी भी केस में नहीं आएगा, ना C के साथ आएगा, ना C++ के साथ आएगा. In case of C language, this is going to give you a compiler error. Yes, it is going to generate the compiler error. Can somebody tell me that what is the reason? हमें ये मालूम है कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, राइट? वी टॉक अबाउट द स्टोरेज स्पेसेस, स्टैटिक, वी हैव एक्सटर्न, ग्लोबल, रिमेंबर? तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, तो इसको मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है? जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है इनको? This is going to get the memory where? In the stack space. Yes? And static means the basic functionality of the static variables is these variables are declared and initialized only once, but इनका जो lifetime होता है, that is throughout the program. These are not going to end by the end of the function, right? तो these are not getting the memory in the stack space. Stack space में कौन से variables को memory मिलती है? जिनका लाइफ टाइम सिर्फ ब्लॉक के एंड तक है. जैसे ब्लॉक एंड होगा, मेमोरी विल बी डीएलोकेटेड. बट स्टैटिक वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता. दिस इज गोइंग टू गेट द मेमोरी इन द डेटा सेक्शन. So that is why this is the main reason why the static variables can't be allocated with the memory. Yes, right? ये clear हुआ? Because of this reason, since the memory is not allocated, so it is going to generate a compiler error. तो कोई भी structure के अंदर आप लोग static variables use नहीं कर सकते. So this is the conclusion. So in C language, we get compilation error. तो इस केस में आपके पास compiler error आएगा. Make sense? ये रीजन क्लियर हुआ सबको? क्योंकि सी लैंग्वेज ये बोलता है जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो, ऑल शुड गेट द मेमोरी टुगेदर. सारे एक सेक्शन में होने चाहिए मेमोरी के. बट हियर दिस रिक्वायर्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द मेमोरी, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू जनरेट अ कंपाइलर एरर. ऑलराइट, आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. Or you can write here the reason, because C requires the whole structure elements to be placed together. And since here these are not placed together, so that's why it is resulting into the compiler error. How to remove the error? Don't declare this variable as a static variable. आप structure के अंदर कितने भी variables declare कर सकते हो. Structure definition ये correct है. कितने भी variables declare कर सकते हो, but any variable should not belong to other section of the memory. Exactly. You cannot declare the static variables inside the structures. तो structure के अंदर आप इसको नहीं रख सकते. तो simple है, error remove हो जाएगी. Okay. So these are the small points from the C programming language जिसके basis पे इस type के questions बन सकते हैं. Okay. Next question. The similar question was also asked in GATE exam. I guess this was asked in GATE 2000. Same question, same options. So those who had already prepared for the GATE exam, मैं फिर से ये point repeat कर रही हूँ बेटा, आपकी जो preparation है वो कभी भी waste नहीं होती है. So जो subjects GATE में थे और
टेक्निकल एग्जाम में है, साइंटिस्ट भी वाले एग्जाम के सिलेबस में, तो कॉन्सेप्ट्स आर सेम, मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मेजॉरिटी अगर ना भी हो तो 50% क्वेश्चंस आर लाइक द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस. So just keep on revising those questions and the concepts. It will really help you a lot in your exam. Very good. Here the answer is 18 bytes. Consider the following C declaration. Now we know one difference between structure and union. Can somebody tell me that what is the difference between structure and union? Basically, structure and union are the user-defined data types. Both are the user-defined data types. What is the requirement of two different user-defined data types, or what is the difference between structure and union? "18 bytes is the right answer. C is the correct answer for this question. Union considers the maximum size. Yes. यूनियन बेसिकली क्या करता है, जो मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, इट इज गोइंग टू टेक दैट मेमोरी एंड दैट मेमोरी विल बी शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनियन. वेयर एज इन स्ट्रक्चर हर एक वेरिएबल को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होगी. तो बेसिकली वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द सिनेरियो जहां पे आपको सारे के सारी वैल्यूज एक किसी भी टाइम पे रिक्वायर्ड हो सकती हैं. करेक्ट. बट अगर एक टाइम पे आपको एक ही वैल्यू चाहिए, यू कैन टेक द अदर वैल्यू एट द डिफरेंट टाइम. इन दैट केस वी कैन गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन. सो स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर को अपनी स्पेस चाहिए. हियर वी आर गिवन दैट assume that the objects of the type short, float and long occupy. Short is taking 2 bytes, float is taking 4 bytes and long is taking 8 bytes. First of all, under the structure, the first member is the short array. Array means 5 elements आ रहे हैं and short के एक element को, एक number को कितना size चाहिए? Short requires 2 bytes, so this requires 2 into and total 5 elements are there, so it requires 10 bytes of memory. Now here we have union. ये union आया. So union is saying that whatever is the maximum memory will be taking that. Float requires 4 bytes of memory and long requires 8 bytes of memory. Maximum is how much? It is 8 bytes. So 8 bytes will be taken and this is the end of the structure. So 10 plus 8 bytes, 10 plus 8 bytes, that comes out to be 18 bytes. So one of the very easy question, 18 bytes is the right answer. Everyone knows the reason as well. Very good. Next one. This is also a question based on the C programming, but यहाँ पे एक arrays with pointers का concept use हो रहा है. काफी डेप्थ में हमने ये डिस्कस किया हुआ है. So those who are targeting on GATE 2024, for them also this type of question can be a part of the GATE exam. So try to return the answer. An array of size 5 is declared and initialized. After that, 2 pointer variables are taken, some addresses are allocated, then there are 2 print statements. So finally, what will be the output? This is what we have to identify. Very good, Nishu. Okay, Deepak also got it right. A for Assam. All right. Nishu, I guess you prepared for GATE exam as well, right? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपका देखा है नाम कहीं पे. Anyways, assume that float takes 4 bytes. Predict the output of the following program. First of all, the header file is there. In this, we have only one function, that is the main function.
तो मैंने हमेशा ये बताया जहां पे डिक्लेरेशन आए मेमोरी एलोकेट करवा दो. सो लेट्स टेक एन एरे ऑफ साइज 5. This is an array of size 5. By default, we know that index starts from 0, 0, 1, 2, 3, and 4. Now here let's assume the base address of an array is 1000. Float takes, यहाँ पे जो array create हुआ है वो float elements are of float type. So next element will be stored at 1004. Next element will be starting from 1008. Next will be starting from 1012, 1016. Now the array is initialized as well. This is 12.5, 10.0, 13.5, 90.5, and 0.5. After that, one pointer variable is declared named as ptr1. Let us take the pointer variable. This is ptr1, and it's initialized with the address of the element of the array. This is array. कौन से एलिमेंट का एड्रेस? एरे में तो 5 एलिमेंट है. कौन से एलिमेंट का एड्रेस? जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस. जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस इज 1000. So 1000 will be stored since ptr1 is a pointer variable. That means ptr1 is going to hold the address of some floating point number. 1000 is stored here. After that, this statement is over. Statement is over. Next statement is declaration and initialization of one more pointer variable, that is ptr2. It is going to hold the address of ptr1. ptr1 क्या return करेगा? Variable name always returns the value whatever is stored inside that variable. तो ptr1 के अंदर क्या stored है? It is 1000. 1000 is some address. Let me write here. ptr1 plus 3. ptr1 is returning 1000. क्या प्लस 3 करके हम 1003 बोल सकते? 1000 is the address whereas 3 is representing the integer. तो क्या आप एड्रेस के अंदर इंटीजर ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो what is this 3 representing? Now 3 is representing that these many elements we need to skip. If one element is taking 4 bytes of memory, so that means 3 elements will be taking 12 bytes of memory. So it comes out to be we have to skip 12 memory locations. Here the size of the element is 4 bytes. So that's why I am multiplying it with 4. अगर यहाँ पे आपको 2 bytes given होता, आप 2 लेते, 8 bytes given होता, 8 लेते. In simple terms, we can say that here we have multiplied it with the size of each element. This is the size of each element. So this comes out to be 1012. So 1012 will be stored inside ptr2. This statement is also over. It is going to print the value at, that is asterisk is nothing but this is dereference operator. ptr2 is a variable, pointer variable. ptr2 will be returning the value inside ptr2, that is 1012. Dereference operator says that इस address के ऊपर what value is available. Value at address 1012 is, address 1012 पे what value is available? It is 90.5. So here first of all 90.5 will be printed. So C and D will be discarded. Statement is over. Next statement is ptr1. ptr2 is 1012 minus 1000. तो जब भी हम किसी एड्रेस के अंदर एलिमेंट को ऐड करें, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द साइज ऑफ ईच एलिमेंट. तो यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने के लिए, स्केल करने के लिए बेस फैक्टर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन के टाइम पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे व्हाटएवर डिफरेंस इज कमिंग अप, स्केलिंग फैक्टर इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट. सो इट इज डिवाइडेड बाय 4. 12 divided by 4 is nothing but that is 3. So 3 will be printed here. So ultimately the output is 90.5 and 3. So A is the answer.
So here in this question the concept of arrays with pointers is used. ये concept हम detail में करेंगे जब हम arrays discuss करेंगे. Arrays is one of the very important topic from the data structures. So arrays with pointers is another important concept. Okay, any doubt? जिन लोगों के आंसर्स करेक्ट है आई होप कि आपकी रीजनिंग भी करेक्ट है, और जिन लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं या फिर रीजंस नहीं पता है, आंसर्स नहीं पता है, दैट्स ओके, बट मेक श्योर आफ्टर द सेशन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर. ऐसा नहीं है कि सेशन के पहले भी नहीं आते थे, बाद में भी नहीं आते, बाद में भी अगर हम सेम सिचुएशन पे है तो दैट मीन्स सेशन अटेंड करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन. What will be the output for this question? This is also a C programming based question. Output of the following program, you are given with the 4 options: compiler error, 10, runtime error, and garbage value. Anyone knows the answer? B. Will it be printing 10? Is it correct? सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे, okay, let's wait for others. You have 10 more seconds. बच्चे मुझे यहाँ पे ये बताओ, मेन फंक्शन को हम बाद में देखते हैं. मेन फंक्शन में द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज struct st, it is declaring one variable, that is 10. It is self refreshing. Basically here it is going to, next को कितना साइज चाहिए, int को depends on the processor, तो 2 or 4 bytes of memory is required. What about next? Next को कितना साइज चाहिए? जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कुछ मेमोरी एलोकेट होगी. कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप. डेटा टाइप यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है? इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सो इट इज गोइंग टू द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इट इज ट्राइंग टू कैलकुलेट द मेमोरी. है ना, मेमोरी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है आप वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करवा सकते. ये वैल्यू कब स्टोर होगी टेंथ में? जब मेमोरी एलोकेट होगी. मेमोरी कितनी एलोकेट करवा रहे हो? अभी हमने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज किया है. इंटीजर की मेमोरी आप बता सकते हो, इसकी नेक्स्ट पार्ट की कितनी मेमोरी है? 2 पार्ट्स शुड बी देयर. लेट अस assume integer is of 4 bytes. है ना? हाँ, अगर यहाँ पे आप पॉइंटर लेते हो देन इट्स फाइन, बिकॉज जब हम पॉइंटर के लिए एड्रेस कैलकुलेट करते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स कि वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. स्ट्रक्चर का स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट पॉइंट नंबर का कर रहे हैं, कैरेक्टर का कर रहे हैं, डबल का कर रहे हैं, डजंट मैटर, बिकॉज जो एड्रेस है इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेसर. अगर आपके पास 64 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है, 4 और 8 bytes of memory will be allocated to the address, correct? But यहाँ पे pointer नहीं है, it's simply the variable. So how much memory will be, this is x and this is next. यहाँ पे memory allocate होगी, यहाँ पे memory calculate ही नहीं करवा पा रहा, because struct st is making a call to itself. This is kind of recursion. So here we cannot calculate the memory. जब memory calculate ही नहीं हुई तो memory allocate नहीं हुई तो initialization नहीं होगी. जब तक initialization नहीं हुई तो print होने का तो मतलब ही नहीं है. So simply it is going to give you a compiler error.
I hope this is clear, because here compiler is unable to find the correct type for the next. Yes, A is the correct answer for this question. आई होप कि जितने हमने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस किए, कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे, 4 to 5 क्वेश्चंस वर ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम. तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे लिए थे जिनमें कम एरर्स आई हुई हैं. किस टाइप की एरर्स आई हुई हैं? सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ हमारे पास आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में ये नहीं कि हमेशा आउटपुट आएगी. You should be aware about each and every simple concept, और जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होता है आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए. ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, दीज वर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन बैच फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, एंड ऑलरेडी हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं. दैट इज फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द NIC NILET एग्जाम. Those who want to avail this opportunity, currently some summer sale is going on. तो आप साइड पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे you have a chance of winning a Goa trip, because after every hour कुछ lucky winners होंगे, those who can win Goa trip. Your session is always helpful. Thanks a lot. My pleasure. मैम NIC में ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे, जो ये क्वेश्चंस है ये है तो सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस. अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आउटपुट ही आएगी. अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है, जो भी आप कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. हर कॉन्सेप्ट में देखो क्यों आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है. अगर यहाँ पे हम ये चीज चेंज कर दे, व्हाट विल हैपन? प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब आप कोड लिख रहे हो उसमें माइनर चेंजेस करके देखो. ठीक है? सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, क्योंकि यूट्यूब पे जो सीरीज आएगी दैट विल बी रिलेटेड टू द PYQs, दैट विल बी रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट, और ओनली द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. फॉर डिटेल कॉन्सेप्ट्स यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, एंड कोड यू कैन अप्लाई इज शेफाली S. मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. जब आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हो ना, you will be able to see only. Okay, so here you can see this is for 3009. यहाँ पे कोड क्या अप्लाई हो रखा है? कोड here is when you go to the coupon, apply coupon, यहाँ पे NIC 30 अप्लाई हो रखा है by default 30% के लिए. If you want to get extra discount, अभी 6 months वाला subscription is for 3009. Just type here Shefali S and apply. हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स. बच्चे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी हैं, दोज आर टेकिंग द सेशंस. जो डिजिटल है वो मैं प्रिपेयर करवाऊंगी, और जो बाकी के इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे फैकल्टीज आपके कवर करवाएंगे कॉन्सेप्ट्स. बी इट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स के हैं, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि जो गेट सिलेबस में आए हुए हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, जो गेट सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो तो सारे आएंगे ही आएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं. तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन डिटेल. वेब टेक्नोलॉजीज इज देयर, जावा, पाइथन, and software engineering, all these subjects will be covered. Okay, and those who have already prepared, जिनको लगता है कि concepts आते हैं but you just want to write the test series, so you can go for the yearly test book pass, and this is for 269. This is after applying the code Shefali S pass. So basically if you want to enroll for the course, then apply the code Shefali, this is my first name, S, and if you want to get the test book pass to get extra discount, कुछ discount मिलेगा but अगर कुछ और extra discount लेने हैं तो कोड इज सेम शेफाली S, और बस एंड पे पास ऐड कर देना है. Is recorded sessions also available or live one only? Recorded sessions are also available. Recorded and live sessions दोनों हैं.
Okay, so you can join this Telegram group, Shefali Ma'am Test Book, to get PDF of all the sessions, doubts and discussion. You can directly interact with me. Quizzes and polls will also be conducted. Link of this channel is there in the description box, so you can subscribe for the channel to get the PDF. I'll share this PDF after the session. Okay. In the next session also, that will be on Monday, because these sessions जो PYQ sessions है, timing is Monday to Friday. So Monday, hopefully I'll be taking the questions. Just let me know you want me to take the questions subject by subject. Any feedback from your side? You want कि एक session में mixed questions लेके आएं या topic by topic prepare करें? So you want to get more questions on data structures and programming. Already 3-4 sessions हो चुके हैं. So we can go for like questions on DBMS or from algorithms, digital. What do you want? Monday to Friday, 5 p.m. to 6 p.m. Rest, अगर कुछ और additional sessions या कोई marathon or whatever announcement will be there, I'll be sharing that in the Telegram group. Ma'am, marathon session, surely will conduct the marathon sessions from next week. अभी के लिए जस्ट टेल मी कि सब्जेक्ट चेंज कर लें, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है, काफी कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग के. मैराथन्स हम नेक्स्ट वीक से करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन राइट, अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके, जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी कमेंट है, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स. Thank you so much, guys. God bless you. I'll see you on Monday at 5 p.m. sharp. To get the links of the session, stay tuned and subscribe the channel. Like the video if you learned some new concepts. And definitely, I'll wait for your comments. Bye-bye. God bless you.